Hello everyone, and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 17th January, Wednesday, and we are here with the Hindu analysis of Wednesday. Now, some of you might be asking, sir, आप कल क्यों नहीं आए? Because actually yesterday there was no The Hindu newspaper. कोई द हिंदू न्यूज़पेपर कल नहीं आया था. उसका रीजन ये है बिकॉज 15 जनवरी को देयर वाज मकर संक्रांति एंड पोंगल फेस्टिवल, एंड बिकॉज ऑफ विच 15 जनवरी को न्यूज़पेपर की ऑफिस क्लोज होगी, तो 16 जनवरी को न्यूज़पेपर नहीं छपा. ओके, सो ऑन 15 जनवरी देयर वाज फेस्टिवल, बिकॉज ऑफ विच द 15 जनवरी the office would have been closed, the Hindu newspapers office and all, and we didn't have any newspaper yesterday. Okay, so that is why we did not have any analysis yesterday. Okay, so let's start with 17 January, Wednesday. So these are the two important articles. The first one says Mathura Mosque, Supreme Court stays inspection commission. Then here it is an article talking about Iran actually attacking some bases in Pakistan, some places in Pakistan. Then the third one is being talked about, which is related with Trump wins big in lower cost. Actually, this is the internal elections of Republican Party in America. So we will be discussing about that as well. Okay. So am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Third one is big. Okay. So let's start with this Mathura Mosque SC Stays Inspection Commission. Look, actually क्या है? First of all, you have to see there is a Shahi Eidgah. So here is Delhi, near to Delhi. Delhi के पास मथुरा है. I hope you are aware. So there is a Shahi Eidgah mosque. Okay, so this is a mosque actually, but the people went to the Allahabad High Court, and Allahabad High Court actually appointed a commission to survey the Eidgah. Okay, now to inspect the Eidgah, because the petitioners believe that this is the place of the birth of Lord Krishna. So Allahabad High Court appointed a commission to inspect the premises, to check the premises of Shahi Eidgah Mosque at Mathura. But so when people filed an appeal in the Supreme Court, the Allahabad High Court order has been stayed by the Supreme Court, stopped the execution of an Allahabad High Court decision to appoint a commission to inspect the premises of Shahi Eidgah Mosque. A bench of Justice Sanjeev Khanna and Deepankar Datta said that the High Court order was passed on an omnibus vague application for the inspection of mosque premises. So the judge, Supreme Court judge, the two judge bench said that it is not very clear, है ना? Omnibus vague मतलब होता है not clear, मतलब जो so the argument given actually by the judge by the Allahabad High Court is not very clear, and that is why we are staying this order. You have to be very clear, very specific why you need the appointment of a commission under Order 26, Rule 9 of CPC. That is what the Supreme Court judge said. Okay. एक दो टर्म पता होना चाहिए. तो प्लेंटिफ क्या होता है? प्लेंटिफ जो एप्लीकेंट जो होता है ना, जो पेटिशनर को प्लेंटिफ कहते हैं. ठीक है, ये सब टर्म पता होना चाहिए. जस्ट हैव एन आइडिया. ओके, यस. सो आई हैव शोन यू हियर इन द मैप. सो हियर इज दिल्ली, नियर टू इट यू विल फाइंड मथुरा. ओके, हियर इज एक्चुअली शाही ईदगाह मॉस्क. Okay, now on the first page there was another article talking about Iran says it has attacked militant bases in Pakistan. Now I hope you are aware, this is an article attacks alleged militant base in Pakistan. Islamabad says unprovoked strikes killed 2 children and all. Now what happened was this was recently in news that Iran has said that there is a militant organization called as Jaish al-Adl, and potentially for the raising and all. So basically they said that they have attacked this militant organization's base in Pakistan. So Iran has said this. Why it is in the news? Because if you see it carefully, then recently Iran was in the news for attacking the bases in Iraq and Syria as well. So 1 or 2 days back. Okay, so that is what you should be knowing it, that 1 or 2 days back Iran attacked some of the places in Iraq as well as in Syria. And now Iran has attacked some places in Balochistan region. तो ये पाकिस्तान का ये वाला जो हिस्सा है ना, this is called as Balochistan region. So the news says that Iran has attacked in the Balochistan region of Pakistan. Like this Jaish al-Adl or the Army of Justice, they founded in 2012, and this is a militant organization, have claimed bombing and kidnapping around Iranian border and all. तो देखो यहाँ पे border touch करता है ना पाकिस्तान and ईरान का, ये जो है ना, ये this is a border. ईरान एंड पाकिस्तान के बीच.
and this actually province is ये वाला जो है ना, ये वाला, this one is actually the state of Balochistan. So here actually the Iran has attacked, इसी स्टेट में अटैक किया है. Iran has fought in border areas against militant, but a missile and drone attack in Pakistan is unprecedented for Iran. So drone से अटैक किया है ना, ड्रोन जिसको UAV भी कहते हैं ना, unmanned aerial vehicle, है ना. So it has used, Iran has used drone and all to attack the militants in this Balochistan province. That is what, according to this article, says. So two Pakistani security officials said the Iranian strikes damaged a mosque in Balochistan's Panjshir district. तो ये जो बलूचिस्तान मैंने बताया ना, ये वाला जो रीजन है, this region is Balochistan. ये भी कहीं भी पांजोर डिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ अटैक किया, and that is what it is in the news. About 50 kilometers inside Pakistan from the Iranian border. So Iranian border से 50 किलोमीटर अंदर. So ये वाला जो Iranian border है, इसे कहीं 50 किलोमीटर अंदर. Okay, that is what this article says. The attack came even as Iran's foreign minister met Prime Minister caretaker Prime Minister of Pakistan Anwarul Haq Kakkar on the sidelines of World Economic Forum meeting in Davos, Switzerland. अब देखो, आपको पता होगा, this is very very important because it do comes in the news that World Economic Forum की जनवरी में जनरली एक मीटिंग होती है, where actually the senior leaders, the foreign ministers, the ministers and the prime ministers and presidents are invited. So World Economic Forum annual working meeting 15 से 19 जनवरी. So it is going on actually. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की मुलाकात हुई, किसकी? ईरान फॉरेन मिनिस्टर एंड पाकिस्तान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की. आई होप यू आर अवेयर. इन डावोस, स्विट्जरलैंड. तो डावोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में. सो दिस इज इंडिया, ये यूरोप है ना. तो ये स्विट्जरलैंड है, इस स्विट्जरलैंड में एक जगह है डावोस. हियर एक्चुअली द मीटिंग हैपन, ओके, ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एवरी ईयर इन जनवरी जनरली. ठीक है, तो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले मुलाकात भी, 1 or 2 days back they met it, and again still but the Iran attacked the region, some regions of Pakistan, in the Balochistan region, you can say, some places of Pakistan. sorry. Okay, so you are watching this class in the if you see the description section, नीचे description पे जाना, यहाँ पर एक link है, लिखा है one-on-one counseling session का link है. So please click on this link, you will get this form, and please fill this Google form. Okay, everyone. Okay, let's move on further. Trump wins big in Iowa Caucus, Vivek quits race. अब देखो क्या है Iowa, ये क्या होता है? It's a province, ठीक है, in America. Iowa Caucus जो होता है ना, एक्चुअली ये इंटरनल इलेक्शन, आप समझ लो, हम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं बिकॉज आई मीन इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सारे डिटेल जाना, बट आई विल एक्सप्लेन. देखो, इन यूएसए वी हैव 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज है मेजरली. वन इज एक्चुअली कॉल्ड एज रिपब्लिकन पार्टी, और इसका सिंबल यही है, एलिफेंट. ठीक है, एंड अनदर इज कॉल्ड एज डेमोक्रेट पार्टी. ओके, एंड द सिंबल इज एक्चुअली दिस इज एक्चुअली अ डंकी. ओके, तो डेमोक्रेट पार्टी से कौन लोग बिलोंग करते हैं? सो करेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो बाइडेन, ही एक्चुअली इज अ डेमोक्रेट. ठीक है, पहले भी रह चुके, जैसे हैव यू हर्ड अबाउट बैरक ओबामा? सो ही वाज आल्सो एक्चुअली अ डेमोक्रेट. ठीक है, ना रिपब्लिकन से जो लोग हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, इज एक्चुअली फ्रॉम रिपब्लिकन. देन वी हैड इन द पास्ट जॉर्ज बुश, ही वाज आल्सो फ्रॉम रिपब्लिकन. विवेक रामास्वामी, ये सब लोग न्यूज में, सो दे ऑल आर एक्चुअली फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी. अब क्या होता है? इंटरनल पार्टी इलेक्शन होता है. सो हु शुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, यानी प्रेसिडेंट कैंडिडेट कौन होगा रिपब्लिकन पार्टी से, उसके लिए इलेक्शन हुआ था. यू गॉट इट? दिस इज नॉट अ इलेक्शन ऑफ यूएसए, दिस इज एन इलेक्शन ऑफ एन इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका. ठीक है, तो अब ये हुआ, ये था कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, अपकमिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा. फॉर दैट द इलेक्शन हैपेंड, and you can see the results here in front of you. So Donald Trump you can say is leading, है ना, with 20 delegates. अब इतना आपको जाना नहीं है कि delegates कैसे calculate होते हैं, that's not for you, but just have an idea about it. Okay, and rest of them are actually, you can say 9 delegates, 8 delegates and all. Vivek Ramaswamy was in the news in India because he's an Indian origin person, है ना, and here is Donald Trump. So basically he has dropped also. तो 15 जनवरी के बाद he decided to withdraw as well. ठीक है, so he's an Indian origin, let me write it so that you can remember, है ना. He later decided to withdraw. So most likely, because if you see the Donald Trump is in the top, so most likely we believe that yes, the Republican candidate in the upcoming presidential election in 2024 will be Donald Trump, है ना. So that is what is being talked about. ठीक है, तो इसी की बात हो रही. I hope you got it, है ना, ये आप समझ गए.
इसको पढ़ लेना लोअर कॉसेस के बारे में थोड़ा सा. सो एवरी 4 years दिस इलेक्शन हैपन एंड ऑल. ओके ठीक है. So just have an idea. Let's move on further. है ना. Former President Donald Trump scored a record-setting win in the lower caucuses on Monday with his rival far behind and all. So that is what you should be knowing. Okay. Yes. ठीक है. इतना आप जान लो. इसमें इतना डिटेल नहीं जाना. We have discussed about Vivek Ramaswamy and all. Now, just before moving on, guys. So these are we are running the free test series. So download our app. Go to CLAT section. ठीक है. अब इसमें करना ये है कि we are running this mock test. ठीक है. तो ये वाला तो डन हो गया, बट ये वाला 15 to 21 जनवरी वी आर रनिंग दिस जामिया के लिए, देन स्लैट के लिए 22 to 28 जनवरी. आप आई वुड सजेस्ट यू शुड अटेम्प्ट ऑल द मॉक टेस्ट. ठीक है. इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग, लेट्स से आप स्लैट दे रहे हो तो भी आप जामिया का दो, अगर आप एमएस सिटी दे रहे हो तो भी आप ये सारा टेस्ट दो. ठीक है. बिकॉज टेस्ट विल हेल्प यू इंक्रीज द योर नॉलेज, योर कैपेबिलिटी एंड ऑल. है ना. आपको आइडिया लग जाएगा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना. ओके. एंड गो टू अवर ऐप, click on talk to counselor and get to know more about our courses and all. So and every Sunday at 1 PM and 3 PM we are running this legal and GK booster series. ये free session है, ऐप पर होता है Sunday को 1 PM and 3 PM. Similarly we are running 2024 के लिए test series. So if you have any query, call on this number. And for 2025 we are running this complete course, 380 plus hours of live session, 300 plus recorded videos, 55 plus mock test. Call on this number if you have any query. Now, let's move on to the next one, judicial contradiction in Delhi Chief Secretary's extension. Now, ये article है, it's written by senior advocate of Supreme Court, Mr. Sanjay Hegde. So basically आपको पहले समझना है कि who is Chief Secretary. देखो, Chief Secretary भी किसी भी state या union territory के सबसे senior most bureaucrat होते हैं. Senior most IS officer in that state या union territory. उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो सबसे सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको हम लोग चीफ सेक्रेटरी कहते हैं. ठीक है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली चीफ सेक्रेटरी एक्सटेंशन. तो होता क्या है कि जनरली रिटायर करते हैं लोग, आईएएस रिटायर्स एट द एज ऑफ 60 एंड ऑल, बट कभी कभी उनको एक्सटेंशन मिल जाता है. एंड मोस्टली द एक्सटेंशन टू एन आईएएस ऑफिसर इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. है ना. तो एक्सटेंशन यानी 6 महीना का, 4 महीना का, साल भर का, लाइक दैट दिस टाइप ऑफ एक्सटेंशन इज गिवन. So he's saying, he's talking about one case related to that. Supreme Court of India's judgment in November permitting a 6-month extension in Delhi Chief Secretary Naresh Kumar is one more instance of court's judicial self-abnegation. मतलब ये बता रहे हैं because basically he is criticizing a judgment of a Supreme Court where Supreme Court allowed the 6 months extension of Delhi Chief Secretary. तो उनके 6 महीना का एक्सटेंशन बढ़ाने को जब चैलेंज किया गया कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया. बट ही इज एक्चुअली क्रिटिकल ऑफ दैट. अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना, बट बेसिक चीजें आपको जो आपको पता होनी चाहिए, यू शुड बी नोइंग इट. जैसे नवंबर में जब बात हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल से जज साहब ने पूछा भी था कि डोंट यू हैव एनी अदर आईएएस. ठीक है. तो आईएएस ऑफिसर्स बहुत सारे होते हैं ना, अगर एक रिटायर कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के लिए तो आप दूसरे को बनाओ. व्हाई यू आर एक्सटेंडिंग द सेम पर्सन एंड ऑल. सो दीस थिंग्स वेर आस्क्ड बाय द जज, द चीफ जस्टिस एंड ऑल. Fair. So later the court was allowed, informed that the center had chosen to extend the chief secretary's term by 6 months. ठीक है. फिर बाद में कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कि नहीं, हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया. अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है, बट जो चीजें आपको दिल्ली से रिलेटेड पता होनी चाहिए, दैट वी विल बी डिस्कसिंग, which can be asked in the exam. The first is which article of the constitution deals with the governance in Delhi. Why we are saying? Because the governance in Delhi is slightly unique, है ना, थोड़ा सा यूनिक है. Yes, I hope you are aware of that. Unique in the sense कि actually generally state में क्या होता है, chief ministers के पास all the powers are there, है ना. But in case of Delhi, which is a union territory, there is lieutenant governor. I hope you are aware. And lieutenant governor has a lot of powers. ठीक है. तो चूंकि ये स्टेट नहीं है तो इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बहुत सारे पावर है, और कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं कि वेदर सीएम शुड हैव द पावर और लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड हैव पावर. So these disputes do happen and all. Yes, the right answer is 239 AA. Yes, Priya Chavan, Namra Aftab, Gargi, Rishi Kumar Jha, you all are right. अब हुआ क्या था कि उसमें बहुत सारे मैटर्स होते हैं, and a lot of times the dispute between actually the chief minister and lieutenant governor happens. So lieutenant governor is Mr. Anil Saxena, na? And chief minister is Arvind Kejriwal, right? So what actually is Article 124 deals with Supreme Court, right? So what actually is, देखो हुआ क्या था कि सर्विसेज बिल इस पर मामला गया था, मतलब मैं शॉर्ट में बता देता हूं. सो लास्ट ईयर देयर वाज अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये जजमेंट जो है वो मई के आसपास में था. उसमें ये था कि सर्विसेज कंट्रोल कौन करेगा,
who should be controlling the services. What do you mean by this? It means who should be controlling IAS officers transfer. IAS ऑफिसर होता है, एक डैनिक्स होते हैं, डैनिक्स ऑफिसर्स भी होते हैं. इनका ट्रांसफर, who would be doing the transfer, whether it is the lieutenant governor or whether it is the chief minister, मतलब the council of ministers. So elected government करेगी, lieutenant governor करेंगे. तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट said it is the chief minister who should be doing it. Okay? अब की IAS का transfers and all. But what happened was later on the government came up with an ordinance. और उसको फिर बिल बना के पास भी कर दिया गया. And this is the name of the bill. The Government of NCT Delhi Territory Act 2023 and this was passed by both Lok Sabha and Raj Sabha, you can see, जिसमें ये कहा गया कि instead of that National Capital Civil Service Authority will be set up. National Capital Civil Service Authority will be set up, which consists of Chief Minister, then Chief Secretary of Delhi and Principal Secretary Home, यानी Home Secretary Delhi. ये तीनों मिलके, all these three, there is a committee which will decide who should mean the transfer of officers. अब इसमें यह है कि these two are actually appointed by central government. Okay? और voting होगी, तो voting होगी if these two are actually appointed by central government, maybe so people said कि maybe 2:1 हो जाए बहुत सारे cases में all, but that's an issue. ठीक है, तो आप चीज समझ गए ना कि National Capital Civil Service Authority will be set up according to this bill. This bill was passed by the parliament where actually there will be a chief minister, chief secretary appointed by center and home secretary appointed by center, and these three will decide the transfer of bureaucrats, officers. ठीक है, तो ये पास में न्यूज में भी था. ठीक है, so that is why you should be knowing it. ये पता होना चाहिए आपको, ये है ना. Okay, yes, Gargi, Namra Aftab, you all are right. आप लोगों को बाकी भी आर्टिकल पता है. I am very happy that you know the other articles as well. Good. ठीक है. Okay, yeah. That is what it must be noted that the government of NCT, इसी को बता रहे हैं ना, government of NCT Delhi Bill Act had been challenged by the government due to, है ना. अब देखो क्या हुआ, इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, ये वाले लॉ को, कि ये गलत है बिकॉज इट इज एक्चुअली ओवरटर्निंग द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर. जैसे ये सब आया था ना कि जो ऑर्डिनेंस आया या एक्ट आया वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया एंड ऑल्सो दीस थिंग्स वेर इन द न्यूज, सो दे हैव चैलेंज्ड इट, लेकिन उसको अभी स्टे नहीं लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने. ओके, किसने? इस बिल को अभी स्टे नहीं लगाया गया. सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस दिस बिल इज वर्किंग नाउ, दिस एक्ट इज वर्किंग नाउ ड्यू टू प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, इट मीन्स that by default it is believed that if a law is passed it is constitutional by default. अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है तो बाय डिफॉल्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल जुडिशरी को स्ट्राइक डाउन नहीं कर दे. ओके, सो प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मींस बाय डिफॉल्ट the parliament, a law made by the parliament or by the state legislature will be considered as constitutional unless and until it has been struck down by the High Court or Supreme Court. ठीक है, the act had been passed to negate the portion of the earlier service judgments, है ना. तो ये सब मैंने बता दिए. These are the things we have discussed it. ठीक है. Okay, so basically he's talking about the same. So however the court's current order permitting union government to unilaterally extend tenure of the incumbent Delhi chief secretary despite government's opposition seems to have gone. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपोज किया था कि जो चीफ सेक्रेटरी का जो एक्सटेंशन है जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं वो सही नहीं है, प्लीज डू नॉट एक्सटेंड इट एंड ऑल, बट स्टिल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज extended the tenure of chief secretary and all. खैर, so these are the things in the news. ठीक है. फिर एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का रोयप्पा केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी. मैंने बताया चीफ सेक्रेटरी इज द सीनियर मोस्ट आईएएस. ठीक है, तो जो चीफ मिनिस्टर के साथ उठते बैठते सारा काम करेंगे. ठीक है, सो ऑफ कोर्स द रोल ऑफ द चीफ सेक्रेटरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे हैव एक्सप्लेन्ड इन द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज द लिंचपिन इन द एडमिनिस्ट्रेशन. सो द चीफ सेक्रेटरी इज द लिंचपिन इन द एडमिनिस्ट्रेशन. अब लिंचपिन क्या होता है? देखो, आपने ऐसा चक्का देखा है कभी? इसमें ये जो होता है ना, ये वाला कांटी, दिस इज लिंचपिन. ओके, अगर हम इसको निकाल देंगे तो क्या होगा? इफ समवन रिमूव्स दिस व्हाट विल हैपन? ये वाला अगर निकाल दिया जाए चक्का बाहर आ जाएगा. यस, so that is the idea of linchpin. It means that this is a very 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 important thing. Without this linchpin the wheel will not move. चक्का घूमेगा नहीं, ये निकल जाएगा बाहर, है ना. तो यही कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी जो लिंचपिन है, यानी इसके बिना शायद गवर्नमेंट या सरकार ठीक से चल नहीं पाए. So that is what the Supreme Court has said. तो ये सब कुछ टर्म्स है, आपको पता होना चाहिए, just have an idea. Okay. Let's move on. एक साइड में आर्टिकल थे हिस्टोरिक हियरिंग प्रोविजनल ऑर्डर बाय आईसीजे ऑन इजराइल विल कास्ट शैडो ऑन लेजिटिमेसी ऑफ इट्स वॉर.
Look, actually क्या हुआ? I hope you are aware this that the South Africa has dragged Israel into the International Court of Justice. It believes that it is doing apartheid, genocide, apartheid, and all. Now, I hope you are aware of this. The 2-day proceeding before the ICJ at the Hague. International Court of Justice is headquartered at the Hague between South Africa and Israel attracted global attention. South Africa in the December moved an ICJ because it is saying Convention on Prevention of Punishment of Crimes of Genocide 1948 against Israel, accusing it of committing genocide during the ongoing military campaign in Gaza. सो साउथ अफ्रीका इसलिए गया है क्योंकि साउथ अफ्रीका ने कहा है कि इजराइल जो जेनोसाइड कर रहे हैं गाजा में. सिमिलरली दे आर टॉकिंग इन द पास्ट 2019 में गैम्बिया जो है ना, उसने भी आईसीजे, गैम्बिया भी अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है. आईसीजे कहते हैं अगेंस्ट म्यांमार फॉर एलिज्ड जेनोसाइड अगेंस्ट रोहिंग्या कम्युनिटी. सो उसी तरह जैसे अगर आप देखोगे हियर इज इंडिया, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पे देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड एज रोहिंग्या एंड देयर इज एक्चुअली देयर इज a lot of news has come in the past as well that the Myanmar has done actually operation on Rohingya community. So for that Gambia went to the ICJ. ठीक है, तो यही सब वो they're talking about and all. ठीक है, तो कहाँ पर है आपको पता होगा, यहाँ पर नीदरलैंड है, नीदरलैंड में एक जगह है द हेग, and here you will find the ICJ, International Court of Justice. So we teach in detail about International Court of Justice, the different organs of the United Nations in our paid classes. Okay, let's move on to the next question. Which of the following Indian is currently a judge in the ICJ? Justice A.K. Sikri, Dalveer Bhandari, R.V. Ravindran, and S.H. Kapadia. What is the right answer? एक इंडियन जो है वो आईसीजे में जज हैं, उनका नाम बताना है. बिकॉज फ्रॉम वन कंट्री देयर कैन बी ओनली वन पर्सन. एक से ज्यादा लोग एक कंट्री से नहीं बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है. एंड देयर इज अ वन पर्सन फ्रॉम इंडिया. व्हाट इज हिज नेम? बताइए, ये तो पता होना चाहिए. नो वन नोज. ट्राई करो, गेस, because yes, this can be asked. The right answer is Justice Dalveer Bhandari. He is a former judge of Supreme Court of India. So B is the right answer. ठीक है, ये अप्रैल 2012 से जज हैं, ठीक है. प्लीज 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 रिमेंबर इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्केट है. बी इज द राइट आंसर. यस, गार्गी वाज राइट. जस्टिस दलवीर भंडारी, ठीक है, ये पता होना चाहिए. तो ये एडिटोरियल में है ना, द साउथ अफ्रीका हैज गॉन टू द हेग आईसीजे अगेंस्ट इजराइल ऑनगोइंग मिलिट्री कैंपेन इन गाजा, है ना. एज द 15 मेंबर, मैंने बताया 15 मेंबर जज होते हैं टोटल. डिसेंबल अलॉन्ग विद 2 एडहॉक जजेस. एडहॉक मतलब टेम्परेरी जजेस, तो 2 टेम्परेरी जजेस भी हैं, है ना. Representing South Africa and Israel, quite a bit of history must have weight on the parties and all. So these are the things they are talking about. Gaza is aimed at wiping out and all. It believes that it is practicing apartheid. Look, apartheid क्या होता है? This is a term specifically used in context of South Africa के context में use किया जाता था ना. You must have heard about Nelson Mandela fighting apartheid. Nelson Mandela is considered as father of nation of South Africa, right? So he fought apartheid. Apartheid मतलब होता है extreme form of racial discrimination. Extreme form of racial discrimination कह सकते हो. So similar term was used by the former Mossad chief also in case of Israel imposing apartheid on Palestinian, this thing and all. So इस तरह की न्यूज में था ना, देखो racial segregation existed in South Africa, Southwest Africa, Namibia वगैरह में. That's actually called as apartheid and all. ठीक है, सो यही सब बात हो रही. दैट इज प्रैक्टिसिंग फॉर द पास्ट 75 years. 75 years क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज इट इज सेड दैट 1948 से द इजराइल वाज बॉर्न. सो इफ यू ऐड 75, इट्स ऑलमोस्ट 2023, है ना. सो ऑफ अपार्थाइड अगेंस्ट पैलेस्टीनियन पीपल सिंस 1948. ओके, सो दे हैव गॉन बाय टेकिंग दिस कन्वेंशन. एक जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948, इसको पढ़िएगा. एंड दिस ट्रीटी वाज एक्चुअली टू प्रिवेंट द सॉर्ट ऑफ होलोकास्ट. तो जैसे होलोकास्ट एक्चुअली क्या था, आई होप यू आर अवेयर, व्हेन हिटलर अटैक्ड एंड किल्ड मेनी ज्यूज. So that is a term used called as Holocaust. Okay, so उसको prevent करने के लिए कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं हो, this genocide convention of 1948 was done at world level to ensure that nothing sort of Holocaust should happen again. Genocide convention of 1948 was done and all. Okay, at this preliminary stage, South Africa sought to demonstrate that some of Israel's acts were capable of falling within the terms of genocide convention. तो वो अपना उन्होंने convince किया है कि these things actually are coming under genocide convention and all. So these are the things. So let's wait for the final judgment, है ना. फिर ये बता रहे कि रशिया ignored an ICJ order to suspend its operation in Ukraine मार्च 2022. तो आईसीजे ने ऑर्डर किया था मार्च 2022 में
कि रशिया जो है सस्पेंड करे अपने ऑपरेशन, बट रशिया इग्नोर्ड इट. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. ओके, द जियोपॉलिटिक्स इन द बांग्लादेश इलेक्शन रिजल्ट्स. अब इसमें भी बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट यस, यू शुड बी नोइंग समथिंग अबाउट द एक्चुअली द बांग्लादेश इलेक्शन. वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर एज वेल. जैसे बांग्लादेश अवामी लीग, देयर आर टू फेमस पॉलिटिकल पार्टीज. ऐसे पार्टीज तो बहुत सारे हैं, but Bangladesh में two famous parties are there. The first is called as Awami League, which is led by Sheikh Hasina, and her father was the first president, and Sheikh Mujibur Rahman. इसको हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया. This was asked in CLAT as well. Sheikh Mujibur Rahman, the father of nation of Bangladesh, है ना, and he was the first president. और ये पूछा था इनका assassination कब हुआ था. So he was assassinated on 15th August 1975 and all. So एक पार्टी ये, दूसरी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी लेड बाय खालिदा जिया. ओके, और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के फाउंडर थे जियाउर रहमान. ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट नाउ. सो दीज आर द टू पार्टीज. तो एक्चुअली जो मेन अपोजिशन पार्टी अभी है देखो, बिकॉज द इलेक्शन हैपन एंड शी अगेन केम टू पावर. शेख हसीना अगेन केम टू पावर एंड दिस बांग्लादेश नेशनल पार्टी एक्चुअली बायकॉटेड इट. द मेन पार्टी है बीएनपी, उसने बायकॉट किया था इलेक्शंस एंड ऑल. ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग इट. एंड शेख हसीना इज अगेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश. तो इसी में बता रहे द रूलिंग अवामी लीग एनालाइज अचीव्ड अ रिजॉर्टिंग विक्ट्री. 225 में से 300 आउट ऑफ 300, 225 सीट्स दे वन. एंड द मेन लीडर ऑफ अपोजिशन बांग्लादेश, मेन अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी एक्चुअली लॉस्ट द इलेक्शन, है ना. एंड इज एक्चुअली मेन अपोजिशन लीडर जो खालिदा जिया है, शी इज एक्चुअली इन जेल अंडर एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ऑल. ओके, सो इनकी जो मेन अपोजिशन है, शी इज एक्चुअली इन जेल एंड ऑल. सो दीज आर द थिंग्स. तो उसमें आप डिटेल में जा रहे हैं. देखो किसी और कंट्री के इंटरनल उसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना है. जस्ट हैव एन आइडिया दैट ओके, सो द ऑथर इज सेइंग कि बांग्लादेश हैज प्रॉस्पर्ड, 7.1% एनुअल ग्रोथ हुआ है, इकोनॉमिक स्केलिंग हुआ है ना. सो दीज आर द थिंग्स. द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज आल्सो वेरी गुड, $15 बिलियन का, ये सब बता रहे हैं, है ना. बांग्लादेश इज इंडियाज क्रूशियल पार्टनर फॉर बैलेंसिंग चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो चाइना के राइस को बैलेंस करने के लिए इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना. That we should have a good relation with Bangladesh and all. Belt and Road Initiative, I hope we teach this in our paid classes. And if you are not aware of it, please read it. Belt and Road Initiative में China is making, constructing roads, railways, है ना, bridges. They are making different, like can say, ports, है ना. So Belt and Road Initiative is very important. Please read it. Otherwise, we teach it in our paid classes, है ना. Belt and Road Initiative. Okay. So US has been critical of Bangladesh government for democratic shortcomings and all. तो यूएसए ने कहा कि बांग्लादेश में पूरी तरह डेमोक्रेसी नहीं है. सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज हैपेंड. मजलिंग ऑफ प्रेस, मजलिंग का मतलब होता है दबाना. सप्रेसिंग ऑफ प्रेस फ्रीडम, यानी जर्नलिस्टिक फ्रीडम. So that is what the USA has said about it and all. We are taking steps to impose visa restriction on Bangladeshi individuals and all. So these are the things they are talking about. अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है कि चाइना इज ऑल्सो इंटरेस्टेड. चाइना इज ऑल्सो हैविंग सम डील विद बांग्लादेश. देन मॉस्को, रशिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू हैव सम डील, समथिंग विद द बांग्लादेश एंड ऑल. ठीक है, ओके. हाँ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 से. यस, नाम आफ्ताब, राइट. हाँ. वोट फॉर कंटिन्यूटी. स्टेटस को सीम्स टू सूट ताइवान बेस्ट इन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना. स्टेटस को का मतलब होता है जैसा है वैसा रहे ना. ओके, सेम एज इट इज, नो चेंज, उसको स्टेटस को कहते हैं. नाउ अब देखो इसमें क्या है, ताइवान के इलेक्शन की बात हो रही. तो यहाँ पर इंडिया, यहाँ पे चाइना है, हियर इज ताइवान. अब ताइवान एंड चाइना का हिस्टोरिक इश्यूज चला रहा है. ठीक है, हम लोग इस पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज दैट्स वेरी लॉन्ग एंड ऑल, बट यू शुड बी नोइंग समथिंग अबाउट इट. वो ये है कि ताइवान के इलेक्शन के बारे में. ठीक है, तो पहले देखो कि रिसेंटली द इलेक्शन हैपेंड ऑन 13 जनवरी. तो ये 3 लीडर थे, है ना. सो दे वर द मेन लीडर्स. अब गौर से देखोगे, so this person Lai Ching-te has won it. His party is DPP. इन्होंने जीता है सबसे ज्यादा परसेंटेज and he will be the next president. ये अभी वाइस प्रेसिडेंट है और इन्होंने इलेक्शन जीता है. ठीक है, तो इनके बारे में लिखा भी होगा ना. वाइस प्रेसिडेंट विलियम लाई चेतिंग टेक ओवर फ्रॉम इनकम्बेंट ताइस इंगविंग, है ना, as he defeated इतना. तो इनका सारे का नाम, तो ये तीनों को, ये दोनों हार गए. ठीक है, and this is the winner Lai Ching-te from DPP party. Okay, so that is what you should be knowing it. And he is the president elect of Taiwan. इन्होंने अभी जीता है इलेक्शन. So earlier, I mean, currently he was the vice president and he has fought the election for president and he won it and he will be taking charge as the next president of Taiwan. Lai Ching-te. हो सकता है पूछ रहे नाम और कौन से पार्टी से, DPP. बस इतना याद रखिएगा. ठीक है, इसी को बता रहे इसको. Because the names are quite difficult to remember. So इतना बस याद रख लीजिएगा. ठीक है ना. ओके, एक दो चीज और ये बता रहे हैं, इसको भी अगर आप चाहोगे तो देख सकते हो. दैट इज दे आर टॉकिंग की
डिफीटेड हो क्यू यू, ये वाले को, एंड ही वांटेड टू हैव अ rapprochement, लिखा ना पुश फॉर rapprochement विद चाइना। तो एक्चुअली क्या है, जनरली स्पीकिंग ताइवान डू नॉट हैव अ गुड रिलेशन विद चाइना, ओके, किसी कारण से। बट ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ही वांटेड टू हैव अ rapprochement विद चाइना। rapprochement एक फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है रिकंसिलिएशन, यानी इंप्रूव्ड रिलेशनशिप, ठीक है, ओके। मतलब ये चाहते थे अगर ये पावर में आते तो शायद वो चाइना से रिलेशन थोड़ा और इंप्रूव कर देते, बट ही डिड नॉट विन इट, द विनर इज दिस पर्सन, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। हाँ, ताइवान की कैपिटल तैपी है, जस्ट रिमेंबर इट, ओके। एक और आर्टिकल, इंडिया डज नॉट नीड वॉर वेरियस, देखो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, ठीक है। इसमें ये था कि रिसेंटली पीएम मोदी विजिटेड लक्षद्वीप एंड आफ्टर दैट सम मिनिस्टर्स एक्चुअली wrote something सोशल मीडिया पे, है ना, and after that the Maldives government suspended these ministers and all, उसके बाद काफी dispute वगैरह न्यूज में था। तो ये लक्षद्वीप here is Maldives, है ना, and it is said that the current the new president who got elected in November last year, Mohammad Bouizu, is pro China and not very supportive of India. He supported the India Out campaign earlier, okay, and he is considered as pro China and all। खैर ये सब बात हो रही है, so we have already discussed it। Then over 38% patient on more than one antibiotic, NCDC survey says, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं कि इतने ज्यादा लोग को एंटीबायोटिक के बहुत सारे नुकसान भी तो होते हैं ना, सो इट शुड नॉट बी यूज्ड अननेसेसरीली एंड ऑल। इसको भी इतना डिटेल नहीं पढ़ना, जस्ट गो थ्रू इट, है ना। अंडरस्टैंडिंग 10th शेड्यूल, ये मैंने कई बार डिस्कस किया, 10th शेड्यूल एंड ऑल, टॉकिंग अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, है ना, जो एंटी डिफेक्शन लॉ, व्हाट वी कॉल इट एज एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंड ये मैंने बताया भी कि दिस वाज मेड अंडर 52nd अमेंडमेंट 1985 ड्यूरिंग द राजीव गांधी टाइम। वी हैव डिस्कस्ड इट सो मेनी टाइम्स, ये कई बार एग्जाम में आया भी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट बी नोइंग इट, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, इसको 10th शेड्यूल अगर आपको नहीं पता है, सो प्लीज गो एंड रीड इट, वी हैव डिस्कस्ड इट, 52nd अमेंडमेंट इन 1985, ठीक है। Then flyers eat an apron Indigo on apron Indigo and airport gets BCS notice। Actually क्या हुआ था कि I hope you are aware, recently we have seen these news कि aeroplane actually जो है because of fog and all other reasons वो time पर aeroplane चल नहीं पा रही है ना, टेक ऑफ नहीं हो पा रही, even trains are also getting delayed, the flights, many flights have been cancelled and all। अब इसमें क्या हो गया कि जो apron जो होता है, मतलब वहां पे जहाँ पे एयरपोर्ट होता है ना, जहाँ पे स्टैंड होता है प्लेन का, उसके नीचे लोग बैठ के वहां पे खाना शुरू कर दिए बिकॉज ऑफ फ्लाइट डिले एंड ऑल। तो फिर इंडिगो एंड एयरपोर्ट गेट्स BCS नोटिस। BCS जो होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी होता है, यानी हवाई जहाज में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उसके लिए एक एजेंसी होती है BCS, ठीक है। सो उसने नोटिस भी इशू किया कि भाई ऐसा काहे हो रहा है ना। फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये सारा पूरा एयरलाइन से रिलेटेड सारी चीज इसी के अंडर में होती है, ठीक है, DGCA के अंडर में, ठीक है, दैट्स शुड बी नोइंग इट। फिर एक और आर्टिकल है वर्ल्ड पेज में, ईरान सेज इट अटैक्ड इजराइल्स स्पाई हेडक्वार्टर इन इराक, IS इन सीरिया वॉज मोर रिवेंज एंड ऑल। एक्चुअली हुआ क्या था कि ईरान में कुछ दिन पहले क्रेमलिन में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 90 to 100 पीपल डाइड एंड ऑल, वी हैव डिस्कस्ड इट फ्यू डेज बैक। उसके बाद ईरान ने इराक के कुछ जगह और सीरिया पर अटैक किया, एंड अकॉर्डिंग टू ईरान इट हैज अटैक्ड द स्पाई हेडक्वार्टर, जो इजराइल का स्पाई हेडक्वार्टर था इराक में और सीरिया में ISIS का हेडक्वार्टर था, वहां पर अटैक किया, दैट इज व्हाट द ईरान गवर्नमेंट हैज सेड, ओके। फिर आपको पता होगा आज ही हम लोगों ने पढ़ा कि ईरान ने फिर पाकिस्तान में बलूचिस्तान रीजन में भी अटैक किया, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। नहीं, कल येस्टरडे क्लास नहीं हुई थी इसलिए कि फेस्टिवल था आलिया कौसर, तो न्यूज़पेपर नहीं आया था येस्टरडे, दैट इज व्हाई वी डिडंट हैव एनी क्लास, ठीक है। So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.